So here's May June 2010 paper 1 variant 2 कोई कुछ कह रहा है? If yes then okay वासी से वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है? Okay, so this is May June 2010 paper 1 variant 2 paper 12 basically. Yeah, basically this is my O level paper. I appeared in O levels in 2010. Okay, so it's been what 11 years? It's quite a lot. It does, especially this question because I was really excited when I got this question right. कौन गया trigonometry का इसमें एक सवाल था ये because we weren't prepared for questions like these. We were wondering क्या calculator के बगैर कैसे होगा trigonometry का question आ गया. How were we supposed to memorize all the inverse? But then I realized कि हो जाएगा उसके बगैर. So yeah, खैर when we do trigonometry, you guys will know what I'm talking about. Anyway. So let's get straight to it. It's a fairly easy question. Okay, it says the diagram shows a circle, center O passing through A, B, C, and D. BOD is a straight line, and BAC is equals to 38 degrees. The line BQ is a tangent to the circle at B. So again, before you do anything else, बस ये tangent highlight कर लो and realize that there is a line in the circle which is passing through the center. So that means ये क्या है? ये आपका diameter हो गया. So instantly हमें ये पता चल गया कि भाई ये angle 90 है और ये एंगल भी आपका 90 है. ठीक है, नाउ इट्स अ नो ब्रेनर दैट द क्वेश्चन विल डेफिनेटली एट सम पॉइंट आस्क यू टू फिगर आउट दिस एंगल. ठीक है, आई मीन गारंटी से मैं कह सकता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सवाल आपसे एंगल पूछे ना उसके बगैर कंप्लीट ही नहीं होगा ये. बट एनीवे, सो या, और ये क्यों है 90 डिग्रीज? बिकॉज द एंगल ऑपोजिट द डायमीटर. ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, इफ आई वांट टू वर्क आउट डी ए सी, हाउ एग्जैक्टली एम आई गोना डू इट, एंड ऑल्सो टेल मी द वैल्यू. कैसे निकालेंगे एंगल डी ए सी? Yeah, angle DAC is equals to 90 minus 38 degrees. So that's gonna be equal to what? That's gonna be equal to 52 degrees. Yeah, thank you, Lee. So there you go. अच्छा, अगर ये 52 degrees है, again I haven't seen what the question is asking for. ठीक है, but can you guys tell me कि what other angle will also be 52 degrees and also give me a reason why? Yeah, angle DBC will also be equal to 52 degrees because of same segment property. ठीक है, let's see. Well, there you go. TBC आपसे, अब आप लोग सोच होंगे कि यार मुझे तो याद थे इसलिए, लेकिन ऐसा सीन नहीं है, if I'm honest. DBC भी आपका 52 degrees के बराबर. These are 1 mark questions. ठीक है, sometimes the question will ask you for a reason, sometimes it won't, but it's always a good idea to write down the reason. ठीक है, एग्जाम के परस्पेक्टिव से मैं नहीं कह रहा कि एग्जाम में आप लिखें, अपने लिए लिखें. ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल की है. फिर आ रहा है सी बी क्यू. अच्छा, लेट्स सी व्हाट सी बी क्यू इज. अगेन फेयरली सिंपल. सी बी क्यू इज दिस एंगल. बताओ ये कैसे निकालेंगे? 90 minus 52 which is equal to what? 38. अच्छा, देयर इज अनदर प्रॉपर्टी जो कि लाइक आई सेड बहुत रेयरली आती है, लेकिन वो ये वाली प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, वो ये कि इफ़ यू हैव 38 डिग्रीज, 38 डिग्रीज के ऑपोजिट एक कॉर्ड है, और कॉर्ड और टेंजेंट का जो एंगल बनेगा आपस में वो भी 38 डिग्रीज होगा. ठीक है, 38 डिग्रीज के ऑपोजिट जो कॉर्ड और टेंजेंट आपस में एंगल बनाएंगे वो भी 38 डिग्रीज होगा. ठीक है, सो फेयरली सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. लेट्स डू अ क्वेश्चन फ्रॉम May June 2011 पेपर 1 वेरिएंट 2. Yeah, there you go. ये खुला हुआ है. Great. Okay, so let's see what it says here. It says A, B, C, and D are points on the circumference of a circle center O. Sorry, मुझे flu हुआ है. CAB is equals to 28 degrees and ACO is equals to 20 degrees. CD is parallel to BA. Okay, so if I were you, I'd underline the word parallel, underline, highlight, whatever. EF is a tangent to the circle at C and OBF is a straight line. Okay, so straight line, tangent, सब कुछ है. tangent भी है, straight line भी है. एक line है जो center से pass तो नहीं कर रही, but yeah, there is an equilateral triangle. ठीक है. Oh, sorry, not an equilateral triangle. Never mind that. There is an isosceles triangle. Can you guys identify the isosceles triangle that I'm talking about? BOC, COB. You can even call it. और क्या बोल सकते हैं आप? OBC, whatever you want to call it. ठीक है. अच्छा, so let's get straight to work. So it says here find angle COB. अब COB should be a no-brainer. Everyone should be able to do it. बताओ क्या होगा COB? 56. ठीक है, क्यों होगा 56? Because angle at the center is 20. Angle at the circumference is 28. Angle at the center will be twice the angle. So I'll write it over here. Angle at the center is twice and all that. ठीक है, सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे. हाँ, वरना एग्ज़ाम में पूछा नहीं है. आई मीन
डोंट गेट एनी आइडियाज. लेकिन 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए कोई भी वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है. आई मीन दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन टू माय स्टूडेंट्स के 1 मार्क क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आप अगेन डोंट गेट एनी आइडियाज. अगर आप चीट करके भी लिख दोगे ना, यू विल गेट अवे विद इट, बट लाइक आई सेड डोंट गेट एनी आइडियाज. OFC is this angle. Okay, so don't just tell me the answer, also tell me कि इसका flow क्या होगा, मतलब how exactly are we gonna get OFC. क्या दोबारा बोलो. Yeah, great. Okay, so basically you probably identified कि ये angle आपका 90 है. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि radius and tangent, ठीक है. And then yeah, you're right, so 180 minus 90 minus 56. So what are you looking at? You're looking at 34 degrees. Yep, you're looking at 34. यहाँ पे let's just write radius and tangent. Okay, then you have OCB. Okay, so OCB is just this angle. कैसे निकालेंगे? Yep, it's an isosceles triangle, ठीक है. और क्यों isosceles triangle? Because OC and OB, they're both radii of the same circle. So that's a no-brainer. We'll do 180 minus 56 upon 2. So कितना हो जाएगा? 180 minus 56 is going to be 124. 124 upon 2 is going to be 62 degrees. There you go. Okay, then you have DCE. अच्छा, DCE is this angle. Okay, so put some thought into it. ठीक है. I'd like you guys to try this out. It's not as difficult as you might think, but try करो. चलो, I figured it out just so you guys know. बिल्कुल 90 बनेगा, बिल्कुल 90 बनेगा. उसके 90 के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे, विच इज़ नॉट अ सर्कल प्रॉपर्टी, इट्स एन एंगल प्रॉपर्टी जो यहाँ पे यूज होगी. थिंक 20 तो नहीं होगा. 20 क्यों होगा ज़रा बता, समझाना ईमान. नहीं, बट you're on the right track. अच्छा ईमान, ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी मुझे याद नहीं आ रही. 28 जो आपके 20 नहीं, 20 तो नहीं होगा ये. 20 तो नहीं होगा ये. 20 से रिलेटेड तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई हो रही. अली आप you're on the right track, but that's not what the answer. बोलो. या 90 minus 20 minus 28. अच्छा मैं बता देता हूँ. देखो, रिमेंबर आई जस्ट सेड कि इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी इट्स नॉट अ सर्कल प्रॉपर्टी, इट्स एन एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है. सो इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी वो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है. सो इफ दिस एंगल दैट यू आर लुकिंग एट इज 28 डिग्रीज, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? रिमेंबर ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसे नहीं है कि अब नल एंड वॉइड हो गई, ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे अप्लाई हो सकती हैं, ठीक है. वो जी बन रहा है यहाँ पे. सो डोंट थिंक कि बस अब सर्कल प्रॉपर्टीज़ है तो बस सर्कल प्रॉपर्टी ही आ सकती है, कोई ऑल्टरनेटिंग एंगल्स नहीं आ सकता, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं आ सकता, वर्टिकली ऑपोजिट नहीं आ सकता. ये सब आ सकते हैं, ये सब आ सकते हैं, और सर्कल प्रॉपर्टीज़ भी आ सकती हैं, ठीक है. सो वी हैव ऑल्टरनेटिंग एंगल्स ओवर हियर. सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 20 डिग्रीज, और ये जो एंगल आप देख रहे हो जो मैं बड़ा सा बना रहा हूँ, this is going to be 90 degrees. वजह radius and tangent. So technically there are two properties that I've used here. एक है आपका radius and tangent, ठीक है. लंबी चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, just write radius and tangent. And the other is alternating angles. So if you want to work out CDE, so angle CDE, let's write it over here. CDE is equal to 90 minus 28 minus 20, ठीक है. So that gives us what? That gives us 90 minus 48, which as Ali said is 42 degrees. ठीक है. Any questions? DCE, CDE, same thing. No wait, it's not the same thing. C center में होना चाहिए. So I'll just write it as DCE. Any questions, boys and girls?
अच्छा, ADC, ADC निकालें ज़रा आप लोग, सोचें ADC कैसे निकलेगा। Let me see the marks. This is a 2 mark question, हाँ, ये दोनों आपके 2 mark question। बताएं, I'm listening. yes. Alternate क्या होती है? Segment. Yes. So basically ये आपका ये वाला एंगल आपका 42 है। सो इस एंगल के ऑपोजिट एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, वो भी आपका 42 डिग्रीज होगा। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल को अगर हम फोकस, इफ़ यू जस्ट फोकस ऑन दिस ट्रायंगल, सो वी हैव 180 minus 42 minus 28 degrees. So 42 plus 28 will make up what? Thank you. 110, 70, 180 minus 70 is 110 degrees. ठीक है, तो ये आ गया आपका ADC। ठीक है, I'll explain this again, हो सकता है किसी को ना समझ आया। So basically here's how this works. The way this works is कि अगर हम सिर्फ इस ब्लू वाले ट्रायंगल को देखें, so ये आपका एंगल 42 है, which means the angle formed between the chord and the tangent। ठीक है, so angle formed between the chord opposite of 42 and the tangent will also be 42। so we knew this 42 and इसकी वजह से हमने ये 42 निकाल लिया। ठीक है, बाकी एंगल, दो एंगल्स हमें पता चल गए, एक एंगल मिसिंग है which we worked out by subtracting, we summed them up and we subtracted it from 180 and we got what? We got angle ADC which we were supposed to find। okay, so I'm going to give you guys a question to solve now। ठीक है, अच्छा, ये सब जब हम क्वेश्चंस कर लें, सो डोंट थिंक बस इट्स द एंड। ठीक है, आई एम श्योर यू गाइस मस्ट हैव टॉपिकल पास्ट पेपर्स विद यू। ठीक है, सो आई लाइक यू गाइस टू प्रैक्टिस फ्रॉम टॉपिकल पास्ट पेपर्स ऑल्सो। ठीक है, करते रहो ताकि भूल ना जाओ आप लोग। मैथ में द बिगर चैलेंज इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, द बिगर चैलेंजिंग इज़ बीइंग एबल टू रिमेंबर द क्वेश्चन। ठीक है, I mean, not just the question, obviously we're not here to memorize the questions, we're here to memorize the concepts। तो concept समझाना is no big deal, लेकिन उसको याद रखना, that's a big deal। Okay, absolutely। अच्छा, so let's start with x। ठीक है, x कैसे निकालेंगे पहले तो ज़रा ये देखते हैं। x shouldn't be too difficult। ये एंगल आपका 90 बनेगा। क्यों बनेगा ये एंगल 90? Because line AD is running through the center। ठीक है, it's a diameter, angle opposite the diameter is 90 degrees। ठीक है, 68 का हाफ तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। 68 का हाफ क्यों करेंगे? देखो, रिमेंबर मैंने आप लोगों को क्या तरीका बताया था, मैंने आप लोगों को ये तरीका बताया था कि जो आप मैं समझ गया आप 68 का हाफ क्यों कह रहे हैं। आप 68 का हाफ प्रॉब्ली इसलिए कह रहे हैं कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, राइट। अच्छा, अब आप ज़रा एक चीज़ पे गौर करें। एंगल एक्स कौन सा आर्क बना रहा है? एंगल एक्स ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, AC, ये वाला आर्क बना रहा है जो मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इफ़ आई लुक एट 68 डिग्रीज, तो व्हाट डू यू थिंक? यू थिंक 68 डिग्रीज इज मेकिंग द सेम आर्क? यू थिंक सो? मैं कर देता हूँ, हाँ ठीक है। तो या इट्स मेकिंग आर्क AB। ठीक है, सो इट्स नॉट द सेम आर्क। लेट्स जस्ट गो बैक। ठीक है, लेट्स गो बैक टू दिस ऐप। हाँ, सो रिमेंबर आई सेड कि इसकी बहुत सारी आपकी वेरिएशंस हो सकती हैं। तो आई थिंक द काइंड ऑफ वेरिएशन दैट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ, लेट मी सी, आई डोंट नो इफ आई कैन इवन रिक्रिएट इट ओवर हियर। या आई थिंक आई कैन। नहीं, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, बट खैर एनीवे। सो सीन ये है, yeah, so scene ये है कि one angle has to be at the center and one angle has to be at the circumference। That's not the only box you have to check। You got to make sure कि they are both facing the same arc। ठीक है, so that's why you can't do half of 68। ठीक है, अब बस I hope that explains it, that clears that confusion। Okay, so ये 90 है, so now you're looking at 180।
माइनस 90 माइनस 43, सही है. अब मुझे बताओ क्या आ रहा है. व्हाट्स 180 माइनस 90 माइनस 43, व्हाट इज दिस इक्वल टू? Yeah, so now you're looking at 47 degrees. मेरा फ़ोन लगा दो चार्जिंग पे, इसकी तो ज़रूरत नहीं है. Okay, so 47 आ गया. उसके बाद let's say I want to work out the value of y. y कैसे निकालेंगे बताओ ज़रा. y के लिए हाँ हम ज़रूर ये करेंगे. Angle at the center is twice the angle at the circumference. So for as far as y is concerned, y के लिए we'll do half of 68. So what's half of 68, boys and girls? 34. So you're looking at 34 degrees. ठीक है. अच्छा, फिर बात आती है z की. So y के लिए हम इसलिए करेंगे क्योंकि देखो एंगल y को अगर हम ट्रेस करें तो ये वाला आर्क बना रहा है. If I trace angle 68, so I'll notice the angle 68 is also making the same arc, isn't it? So what do you suggest? Can I use this property? समझ आई या नहीं? Okay, so y is 34 degrees. सेम सेगमेंट देखो, सेम सेगमेंट की कंडीशन क्या है? सेम सेगमेंट, ऑल्दो दे आर बोथ फेसिंग द सेम सेगमेंट, आई एग्री विद दैट, बट सेम सेगमेंट की कंडीशन ये होती है कि द टू एंगल्स इन क्वेश्चन हैव टू बी फॉर्म्ड एट द सर्कमफ्रेंस एंड दे शुड ऑल्सो बी फेसिंग द सेम आर्क. सो यहाँ पे हम एक ही बॉक्स चेक करें कि येस दे आर फेसिंग द सेम आर्क बट दे नॉट फॉर्म्ड एट द सर्कमफ्रेंस. मुझे बताओ एंगल ए ओ बी सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है? कहाँ बन रहा है एंगल ए ओ बी? इनफैक्ट ये तो बन रहा है सेंटर पे. ईमान, आर यू फॉलोइंग? या एग्जैक्टली एट द सेंटर. ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू कांट यूज द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी. ओके, सो ये हो गया आपका. फिर बात आती है z की. अच्छा, सो एज फार एज z गो, z इज ऑल्सो प्रीटी सिंपल. ये एंगल हमारा 90 होगा, वजह बिकॉज इट्स रेडियस एंड टैंजेंट. सही है, सो z कैन बी वर्कड आउट बाय डूइंग 180 माइनस 90 माइनस 68. कितना आ रहा है जरा बताना. 180 माइनस 90 माइनस 68 यार है आपका 90 माइनस 68 इज 22 डिग्री. सही है. ओके, सो हियर इज 22 डिग्रीज. अच्छा, फिर आती है t की बात. ओके, सो एज फार एज t गोज, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं आप लोग, और कैसे निकालेंगे ये भी बताएगा, और ये भी बताएगा कि हम निकाल ही क्यों रहे हैं एंगल. Yes. Okay. So basically we're working out this angle so that we can work out ये वाला एंगल जहाँ पे मैं एरो बना रहा हूँ. ठीक है, ये वाला एंगल जहाँ पे एरो दिख रहा है आपको. ओके, सो 180 माइनस 43 माइनस 68 कोई करके बता देगा प्लीज़. ओके, सो हियर 69, सो दैट मीन्स ऊपर जो आप देख रहे हो वो भी आपका सेम होगा. सो दिस इज गोना बी 69 डिग्रीज ऑल्सो. So now if I just consider the triangle that I'm highlighting in green, okay, let's switch to green for that. So 180 minus 69 minus 34. So मुझे बताओ what's 180 minus 69 minus 34 please. There you go. इसमें आप साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल भी नहीं लगा सकते. हो सकता है आप में से कोई एक सोच रहा हो कि यार हाउ अबाउट आई यूज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. ठीक है, ऑल्दो आई होप या ओके. सो हियर समथिंग आई वांट टू पॉइंट आउट. ठीक है, लाइक आई सेड, हो सकता है आप में से कोई सोच रहा हो कि यार हाउ अबाउट वी यूज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. सो द रीजन व्हाई यू कांट डू दैट इज बिकॉज yes BOCD is a BODC is a quadrilateral, but not all 4 points are touching the circumference. So while you can use the property of a quadrilateral, which is the sum of interior angles equal to 360, but you can't use the property of cyclic quadrilateral. Okay, so ये हो गया हमारा. So can I have the answers first, फिर हम discuss करते हैं. X का 53 सही है. (22) 5 का 40 सही है. Okay, so let's just quickly discuss the answers. Let's just quickly go over the solution. So as far as x goes, x के लिए we look at CDEB.
So we can see कि ये एक cyclic quadrilateral बन रहा है, and we will do 127 plus x equals 180. X is equals to 180 minus 127, which means it's equal to 53 degrees. So x is equals to 53 degrees. ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने 53 degrees. फिर बात आती है y की. So y के लिए y के लिए are we talking about same segment? Yeah. No wait, y के लिए we're not talking about same segment. Y के लिए aren't we dealing with? Oh wait a minute. You're right. My bad. So x हम निकाल चुके हैं 53. सही है. So here's 40. तो ये भी आपका 40 होगा, same segment. So I'll write it over here. 40 degrees, same segment. ठीक है. फिर आई बात z पे. z के लिए absolutely. So remember I said कि ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी आपकी साइमल्टेनियसली आती रहेंगी. So you're looking at 62 and ये वाला एंगल भी आपका 62 होगा. ठीक है. So 62 degrees, इसमें से part of it is 40. So z is equals to 62 minus 40, which means z is equals to 22 degrees. Okay. And that's it. Okay. So let's just do one more question. We have the time. Okay guys, sorry about that, extremely sorry. So yeah, I'm assuming you guys are done with the question. Of course, there's no. Yes, sir. अच्छा, so let's just quickly go over. पहले आप लोग मुझे अपने answers बताएं, फिर मुझे बताएं क्या सीन है. X आ रहा है 106. Reason? Although the question wasn't asked, but I'd still like to know. So वो angle at circumference. Yeah, angle at the center is twice the angle at the circumference. So y is 127. ठीक Due to the है. cyclic quadrilateral. 127 because it's a cyclic quadrilateral. Very good. What about z? 37. There's T37 or Z53. Sorry, Z53, T37. Z53 होगा because of alternating angles. ठीक है. And T जो है आपका T होगा आपका 180 minus 90 minus 53, so that's going to be equal to 37 degrees. ठीक है. I hope all of you got the same answers. Anything you guys want to discuss? Wait, there isn't cyclic quadrilateral always touching the circumference? Yeah. All it 4 is. points. It is. So, but x not touching the circumference. in this one. देखो, we're not looking at x. We're completely ignoring x. We're just looking at this. This is what we're looking at. Oh, okay. अब बीच में मैं कितनी भी लाइनें खींच दूँ ना, that's irrelevant because we're not concerned. We don't care, to be honest. Okay. चलें. Sounds good. I'll stop here. ठीक है. Again, keep practicing this topic. ठीक है. अभी हो सकता है आप सबको सब कुछ बहुत अच्छी तरह समझ आ गए हो, but it's not enough. Make sure to do past paper questions. मैं भी कोशिश करके टाइम निकाल के ना I'll make a video on this. Although I do have another video on it. उसमें भी मैंने past paper question solve किए. मैंने जब बनाने बैठा तो मुझे याद है मैं already कर चुका हूँ. But go over that. ये recording भी है. You guys have access to this recording also. So just keep practicing. This is a very important topic for paper 1. Although having said that, that doesn't mean कि बस ये paper 1 में ही आएगा, paper 2 में नहीं आएगा, paper 2 में भी आ सकता है. ठीक है. But and honestly it's very easy. ठीक है. I'm sure आप लोगों को questions करके idea हो गया होगा. It's very easy. वही गिनती की properties हैं जो बार-बार घूम फिर के apply होती रहती हैं. Anyway, so I'll stop here. I will inshallah see you guys on Wednesday. Yeah. So take care, guys. Allah Hafiz. Alhamdulillah. Sir, thank you. You're welcome.